नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत करुच्ची स्टडी के ओपीएससी चैनल रे टुडे वी विल सी अनदर न्यू टॉपिक related to Odisha history and the topic is peasants uprising in Odisha. जदि आपण जानिथिबे इन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल जहाँ भी आपनकर रिवोल्ट देखिबा को मिली छी ऑलमोस्ट इंपोर्टेंट रिवोल्ट्स गुडी करे पीजेंट्स मानकर कंट्रीब्यूशन काफी अछि तो एक्सक्लूसिव पीजेंट्स अपराइजिंग को आमे फोकस करबा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर जदियो किछि कॉमन जिनस आपन को देखिबा को मिलेबो डिस्कस करबी कोन से एक्चुअली कॉमन तो पीजेंट्स मानकर कॉज या पीजेंट्स मानकर जो तांकर फैक्टर्स गुडी को या समानकर कंसर्न गुडी को ही कंसीडर करगी वी विल डिस्कस दिस टॉपिक ओके सो जदि पीजेंट अपराइजिंग रिलेटेड if you find any such exclusive questions in prelims then also you will be able to answer or the exclusive question in mains also you will be able to answer right so I hope audio and video everything is fine so jo mane online achandi semane confirm karibe and please share this video with your friends and relatives so that those who are appearing for the OPSC exam so let's start first ame dekhiba uprisings Piker rebellion is a common rebellion ame janiche but still जदियो पाइको was the leader in that particular revolt but सेठी peasants मानकर भी रोल अछि so पाइको rebellion 1817 and जदियो लीडर थिले बक्सी जगबंधु ओके जदि कॉजेस आपण देखिबे British land revenue policy which were affecting the peasant class a loss of traditional rights of paikos okay सेमती घुमसार rebellion देखिबे घुमसार rebellion जय जगन्नाथ सिद्धार्थ शंकर घुमसार rebellion 1835 to 36 धनंजय भंज annexation of British oppressive rule and tribal discontent सेमती कंधर rebellion देखिबे 1846-55 चौकरा बिस्वे British interference in tribal custom and exploitation of जमींदार्स to the peasant class ई जो मूवमेंट्स गुडी को आपण देखुचंदी ई जो कॉमन एरिया मु आपण कहउतिल ना से कॉमन एरिया होची कोन ना ट्राइबल मूवमेंट और पीजेंट मूवमेंट ट्राइबल मूवमेंट and peasant movement so more of overlapping in nature तो सेति पई ई पर्टिकुलर मूवमेंट्स गुडरे से peasant uprising बे आपन को देखिबा मिलिबो सेति देखिबे भुवन rebellion 1867 tribal peasants of भुवन area forced labor बेगार जो आपनकर बेगारी बेठी में प्रजामंडल मूवमेंट रे भी देखितिले similarly excessive taxation and British misrule सेमती तेलंगा खरिया revolt 1850s and 60s तेलंगा खरिया in western Odisha British forest law curtailment of tribal rights Sambalpur uprising Surendra Sahib was the leader 57 to 64 and against British annexation and feudal operation okay so these are the very basic understanding a table team apan ko first slide re dekho so that you will have a broader idea okay prelims based information apan ko eti mili jibo so let's see in detail common themes in the uprising common themes या common causes आपण कोई परिवे common themes or common causes the first one is colonial land revenue system okay so when this East India Company came they started imposing taxes on each and every aspect of human life जदि आपण grazing field to आरंभ करिकी आपणकर एग्रीकल्चरल फील्ड टू आरंभ करिकी रिलीजियस प्लेसेस सबु जगह रे समाने टैक्स को इंपोज करबा स्टार्ट कले सो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज अनदर फैक्टर एवं जदि आपन को मु स्पेसिफिकली जदि कहिबी आपन देखिबे ओडिसा जदि आपन देखिबे ब्रिटिश अंडर रे गोटे नॉर्दर्न पार्टी आपनकर थिला बिहार बंगाल and Odisha ये northern part one part of Odisha was with the northern side northern part south party थिला Madras province रे okay so ई जो party थिला बिहार बंगाल ओडिशा सहित एठी आपनकर अंडर द परमानेंट सेटलमेंट जोटा हितला 1793 रे by the Cornwallis ये थिला लैंड रेवेन्यू पॉलिसी सदर्न पार्टी मद्रास प्रोविंस रे जेतु थिला सेठी आपनकर रायतवारी सिस्टम को इंप्लीमेंट करा जायथला रायतवारी सिस्टम ऑपोजिशन टू डिस्प्लेसमेंट लॉस ऑफ ऑटोनॉमी इन द सेंस की जेमती ट्राइबल मानकर फॉरेस्ट लैंड गुडी को थिला सेही टाइप रो पीजेंट्स मानकर डिस्प्लेसमेंट देखिबा को मिलथिला एज फार एज एग्रीकल्चरल लैंड इज कंसर्न एवं इफ जेमती आपण देखिथिबे जदि से माने रेवेन्यू पे करि परिबे नाही देन लैंड विल बी सीज्ड
ओके लैंड को मर्गेज हिसाब रे दिया जाउथला लैंड विल बी सीज्ड सो दिस वाज द सेकंड एस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट थर्ड थिला असर्शन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशनल राइट्स एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट जमींदारी एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्स्ड लेबर ये फोर्स लेबर हूँ जोटा आपंकर बॉन्डेड लेबर एंड बेगारी बेगारी भी रीजन कौन थिला ना सेम सिमिलर जमती सपोज रेवेन्यू आपण न देई परले द फार्मर कैन नॉट और पीजेंट कुड नॉट पे द रेवेन्यू तो ऑब्वियसली तार लैंड को सीज करा जाउथला और ही वाज और हिज फैमिली वाज फोर्स्ड टू एंगेज इन द बेगारी सिस्टम और फोर्स लेबर हिसाब रे एंड जमींदारी एक्सप्लॉयटेशन भी थिला इफ यू सी जमींदारी एक्सप्लॉयटेशन वाज देयर इन दिस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जोटा की बिहार बेंगल ओडिशा सहित थिला ओके सो दीज आर ब्रॉड फैक्टर्स और रीजंस बिहाइंड द पीजेंट मूवमेंट नाउ मूविंग टू द वन बाय वन डिस्कस करिबा द फर्स्ट वन इज द पाइकर रिवेलियन बिरबल माजी हेलो हाउ आर यू पाइकर रिवेलियन 1870 पाइकर रिवेलियन 1817 ए पीजेंट रिवोल्ट इन ओडिशा कोठी एइतला देखंतु खुर्दा रीजन काफी ऑब्जेक्टिव सहित हमें डिस्कस करिबा खुर्दा रीजन रे देखिबा को मिलथिला लीडर किए थे बक्सी जगबंधु विद्याधर ओके लीडर किए थे बक्सी जगबंधु दिस आई मीन ही वाज द फ्रंट लाइन लीडर ऑल्दो देयर आर अदर लीडर्स एज वेल मिलिटरी कमांडर से थे बक्सी से कुआ जाइतला एंड लीडर ऑफ द पाइकर्स ट्रेडिशनल मिलिशिया ऑफ ओडिशा पाइकर्स जो माने कि दे वर फाइटिंग टू डिफेंड देयर मदरलैंड ओके पाइकर्स जो माने कुआ जाउतला से मानकर लीडर थे कि बक्सी जगबंधु ऑल्दो बक्सी जगबंधु was fighting for some other reason but say dimension को हमें cover करिबा नाही since we are covering जो आपनकर peasant point of view सेटा देखिबा nature of the revolt though led by the pikers it classified as the peasant revolt okay because it involved a broad coalition between what peasant tribal jamindars and artisans it involved a broad coalition peasant tribal jamindars and artisans rooted in agrarian distress, land alienation and revenue operation. Let me tell you, तो स्पेशली सेतबले नेक्सस का से थिला जो ऑफिशियल्स माने थिले खास करके बेंगली ऑफिशियल्स माने थिले सेतबले रेवेन्यू ऑफिस जोटा थिला आपनकर ओडिसा रे रेवेन्यू ऑफिस थिला कटक रे थिला रेवेन्यू ऑफिस जो ऑफिशियल्स माने थिले से माने थिले बेंगलीज सो बेंगली ऑफिशियल्स एवं जमींदार मानक सहित ए काइंड ऑफ नेक्सस या जोटा हमें कहना कि क्रोनी कैपिटलिज्म टाइप रो सही टाइप रो ही थिला नेक्सस से मानकर थिला तो से माने पीजेंट्स एवं ट्राइबल्स मानकर लैंड कैप्चर करिवार व्यस्त थिले ओके पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स मानकर लैंड से माने लैंड ग्राबिंग या लैंड एलिनेशन माने कोन से मानकर लैंड रु से मानको वंचित करिवा डेप्रिवेशन फ्रॉम द लैंड ओनरशिप ओके एंड रेवेन्यू ऑपरेशन इफ दे आर नॉट सपोज टू लाइक पे यदि से पे भी करि परिबे नाही ऑब्वियसली से मानकर लैंड को सीज करा जिवो एंड ओनरशिप ट्रांसफर करा जिवो तो ये जो जिनस होइतला इनफैक्ट यदि आपण बक्सी जगबंधु को सहित भी देखिबे एक्जेक्टली दे डिड द सेम थिंग कारण जेहेतु से बक्सी थिले यानी कि कमांडर इन चीफ थिले तो राजा तांको बहुत गुडा लैंड देथिले ही वाज गिवन आई मीन द लैंड एंड ही डिड नॉट हैव टू पे एनी रेवेन्यू और टैक्स टू द किंग ओके जेहेतु तांको नारे काफी लैंड थिला तेणु वन बेंगली क्लर्क व्हिच ही वाज वर्किंग इन द जो तहसील ऑफिस से किछि धोखाधड़ी करिकी तांको लैंड रो काहाकू अन्य काहाकू बिकी दिथिला एताकू आउ काहार नारे कर दिथिला जोथि पई कि बक्सी जगबंधु वाज इंसल्टेड और फेल्ट आई मीन काफी ऑफेंसिव थिला तांको पई जोथि पई कि ही इन्वॉल्वड इन दिस आई मीन रिवोल्ट तो तांको सहित भी एक्जेक्टली सेम थिला तो बेसिकली जो माने पीजेंट थिले ट्राइबल्स थिले समान सहित लैंड एलिनेशन गोटे बड़ फैक्टर एंड रेवेन्यू सेपरेशन गोटे बड़ फैक्टर थिला तो मुझे आपन कहली कटक थिला रेवेन्यू ऑफिशियल ऑफिस एवं ऑफिशियल्स माने बेंगली ऑफिशियल्स थिले एंड से माने काफी एक्सप्लॉइट करूथिले एग्रेरियन डिस्ट्रेस वाज अनदर फैक्टर कारण आपन जानिथिबे जो फेमाइन वाज रीऑकरेंस इन ओडिशा फेमाइन वाज रीऑकरेंस इन ओडिशा नौंक दुर्भिक्ष 1866 was one such example so famine reoccurrence काहे के थिला then there are multiple factors एक तो policy जो ब्रिटिश पॉलिसी थिला they were not paying any attention with respect to जो food security या food stock maintain करिवा food provide करिवा ए सब किछ नथिला and second जिंस होउची
they started forcing those Odisha जो peasants या farmers माने थिले towards commercial crop कहेंगे ना, because to feed their industries, कारण जेहेतु industrial revolution start ହେଇଥିଲା, they needed more indigo, they needed more cotton, तेणु food crops ଜାଗାରେ ସେମାନେ cash crops produce କରିବା start कले, जोथि ପାଇଁ कि agrarian distress भी देखिବାକୁ मिलिछि, food shortage देखिବାକୁ मिलिछि, they have stopped investing in irrigation, all those facilities, तेणु ସେମାନେ काहा उपरे छाडले, जेमति permanent settlement आपण देखिबे ସେମାନେ जमींदार्स मानकु ओनरशिप राइट ଦେଇଥିଲେ, and they were expecting कि जमींदार्स would invest in those land to increase the productivity, but जमींदार कोन पई प्रोडक्शन को बढ़ाइबा पई से इन्वेस्ट करिवो. जमींदार्स were started living in the urban area, they had a lavish life, तो ସେମାନେ कहले भाई अल्टीमेटली जदी ब्रिटिश रही लैंड आमे कोन पई सेठी इन्वेस्ट करिकि प्रोडक्शन को इंक्रीज करिवो. सो दैट डिड नॉट आल्सो हैपन. तो ई सब रीजन गुडी को पई जोथि पई कि आपन को एग्रारियन डिस्ट्रेस देखिबा को मिलिबो, एंड अल्टीमेटली सफरर्स वर द पीजेंट क्लास. ओके, इट देखंतु इकोनॉमिक फैक्टर कोन अछि. हार्ट्स ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, कन्फिस्केशन ऑफ रेंट फ्री लैंड ऑफ पाइकर्स. पॉलिटिकल देखंतु अबोलिशन ऑफ खुर्दा किंगडम, रिड्यूस स्टेटस ऑफ लोकल रूलर्स. खुर्दा किंगडम कारण से माने धीरे धीरे कैप्चर करबा स्टार्ट करिथिले, तेनु खुर्दा किंगडम को अबोलिश कले से माने. Disrespect of local custom and imposition of foreign administration. Military, disbanding of pikers from their traditional military role. Okay, so these are few factors, plus addition to these factors led to this piker revolt, जोटी कि हमको देखिबा को. सिग्निफिकेंस देखंतु piker rebellion रो. Significance कोन, one of the earliest organized armed revolt against the British, एवं 2017 रे we celebrated आपण देखिथिबे 200 years also we celebrated. Involved wide popular participation, adds making it a people movement, a peasants movement or pikers movement, recognized by the government of in recent year as precursor to the 1857 revolt. As you know, it was a consistent demand from Odisha to make it as the first India's independence revolt, but finally it was not given that status of first India's independence revolt. Although 1857 was given the first India's independent revolt, but 1817 was the precursor or kind of inspiration it gave us for this 1857 revolt. Okay, so सितपे आपण देखिबे जो NCERT आपनकर अछि, NCERT रे has been given a special place as a case study to this 1817 revolt. Okay, नेक्स्ट देखिबा घुमसार रेबेलियन 1835-36. लोकेशन कोड थिला घुमसार रीजन, जो वर्तमान गंजाम डिस्ट्रिक्ट आपण देखिबे घुमसार रीजन. लीडर के थिला धनंजय भंज, राजा ऑफ घुमसार, एंड चक्रा विसोई द ट्राइबल लीडर, सक्सेसर ऑफ द रेजिस्टेंस आफ्टर धनंजय. इट इज एमती रीजन्स गुडी को देखंतु. फर्स्ट पॉलिटिकल रीजन, घुमसार किंगडम को एनेक्स करागला अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रे जदी आपण ये गुडी को देखिबे तार क्लॉज गुडी को देखिबे, biological son or biological son would be the legal hire, adopted son हवनी. तो ये गोटे फैक्टर थिला तनु घुमसार किंगडम को एनेक्स करा जायतला, जेमति झांसी को भी देखिबे आपण एनेक्स करा जायतला. सिमिलरली सोशल एंड कल्चरल जदी देखिबे, ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द ट्राइबल कस्टम. जेमति ट्राइबल मानकर कस्टम कोन थिला, मेरिया सैक्रिफाइस, ह्यूमन सैक्रिफाइस थिला. दे हैड दिस ओन ट्रेडिशनल कस्टम, ए सब थिला. ताको ए माने बैन करबा स्टार्ट करले इन ह्यूमन प्रैक्टिस कहिकी. सो दे आल्सो स्टार्टेड रिवोल्टिंग, एंड खास करिकी कोंधो ट्राइब माने. इकोनॉमिक फैक्टर देखंतु, हार्स रेवेन्यू पॉलिसी, एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट वाज इंक्लूडेड इन द सदर्न प्रोविंस, एंड सेठी आपनकर रयतवारी सिस्टम लागू करा गला. रयतवारी सिस्टम रे आपण जानिथिबे डायरेक्टली riots were given the ownership. Okay, Reed and Munro itaku implement करथिले. Riots were given the ownership and directly revenue were extracted from the riots. तो ये गोटे फैक्टर थिला. Okay, and increased taxation. Administrative replacement of traditional rulers with the British officers. Okay, British officers in the sense ki I mean the kind they were acting like a machine. By rule माने rule, क्रॉप फेलियर अच्छी किसी फरक पकोनी, क्रॉप प्रोडक्शन कम अच्छी किसी फरक पकोनी. व्हाटएवर टैक्स हैव बीन फिक्स्ड यू हैव टू पे टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. सिग्निफिकेंस देखिए, वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, marked by deep tribal resentment towards forced socio-religious changes. Socio-religious changes कोण?
ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲି Maria sacrifice, ये Maria sacrifice होची human sacrifice, and these rituals are very close to our religion, okay, close to our cultural aspect. So once you are questioning or you are or British ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ban କରିବା start କଲେ, obviously it's something interference in the socio-religious life of the people and highlighted the indigenous struggle for autonomy and protection of the traditional ways of life. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି 1813 onwards British have started intervening in the socio-religious life of the Indians. ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କରୁନଥିଲେ 1813 ପୂର୍ବରୁ you will find a different kind of British administration. They were only focusing on the taxes and administrative policy. But 1813 onwards they have started intervening in the socio-religious life of the people to make these people change. ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସତୀ ସିଷ୍ଟମ ହଉ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ widow remarriage ହଉ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, which is something very concerning for those common people କି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ट्रेडिशनल कस्टम लाइफ थिला कारण ई सब जिनस गुडी एमते रिचुअल बर्थ एंड डेथ रो जो रिचुअल गुडी को हम कंडक्ट करछु दैट आर दे आर वेरी मच अटैच्ड टू आवर रिलीजन. तेणु वन्स यू आर क्वेश्चनिंग ऑन दोज रिचुअल्स दैट मीन्स यू आर क्वेश्चनिंग आवर रिलीजन एज वेल. तेणु सेति पई एमानकर गोटे काफी रिजेंटमेंट स्टार्ट हेतिला जहा फଳରେ इट वाज रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ रिवोल्ट और जो आपण कहि परिए प्रोटेस्ट मूवमेंट हिसाब रे. ओके, नाउ कंदर रिबेलियन देखिबा 1846 to 1855 लोकेशन Kandhamal, Ganjam, Kalahandi region. So mostly the Kandhar tribe, they were initiating this, okay, indigenous forest dwelling tribal community, because forests were very associated with the tribals and forest were the livelihood, their home, everything, and they were worshipping the nature as well. So they have started, the British have started the imposing taxes on the use of forest products, okay. So this was another aspect. Prominent leader को माने थिले देखो चकरा विसोई, charismatic tribal leader who mobilized Kandhas against British operation. Okay, चकरा विसोई आपण देखि परिबे prominent leader. First देखो again the same thing, tribal custom, especially efforts to stop Maria sacrifice जोटा मैं एबे कहउतली आपण को a traditional ritual among Kandhas. तो tribal मानकर actually human sacrifice थिला because they do believe on the nature. तेणु नेचर सपोज एमती वर्षा हो नाही, ओके, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर. सो सेमान को कोन लागुथला कि नहीं नेचर को खुशी करेबार अछि, माने वर्षा को खुशी करेबार, सो नीड ब्लड. सो ब्लड माने ह्यूमन सैक्रिफाइस करूथि. ए सब को एमाने रेस्ट्रिक्ट करबा स्टार्ट कले. आज आई टोल्ड यू 1813 परे ताकू इंटरफेरेंस करबा सेमाने स्टार्ट करिछन. एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल एंड वीकनिंग ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल गवर्नेंस. Obviously traditional tribal governance माने कोन जेमती वर्तमान आमे देखुचे आपण यदि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन रे देखिबे वर्तमान हरियाणा एंड पंजाब यू विल फाइंड द खाप पंचायत. ओके, ये खाप पंचायत एक्जैक्टली कोन, दे हैव दिस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नीदर दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर दे आर स्टैट्यूटरी, बट सेमानकर गोटे एसोसिएशन अछि जोटी की जो एल्डरली पीपल दे सिट टुगेदर एंड दे डिसाइड व्हाट शुड बी डन इफ एनी सच wrong thing happened in their society. तो जो खाप पंचायत रो जो कल्चर टी अछि, obviously if you want to question on the खाप पंचायत, erode the खाप पंचायत, obviously सेट गोटे resentment अछि. सितपे आपण देखिबे no government, no political party wants to question or raise question against that खाप पंचायत, कारण गोटे vote to bank politics भी रहउची जोथि पई से माने question raise करूना. तो सेही टाइप रो सबु कल्चर सबु सोसाइटी रो गोटे निजरो इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन अच्छी, इंडिजिनस पॉलिटिकल सिस्टम अच्छी, इंडिजिनस कल्चरल सिस्टम अच्छी. जदि आपण सेठी इंटरवीन करिवा स्टार्ट करिवो, obviously you will face the consequences, you will face the resistance and resentment. So similar thing happened during that time. जो political organization है माने interference करिवा start कले, and that also led to this movement. Economics, obviously heavy taxes and land alienation and economic exploitation. If you see the social cause, disrespect towards tribal identity, that means British considers this the Indian civilization, be it tribal, be it normal people, be it scheduled caste, be it peasant or any such, Indians were inferior in civilization. Their civilizations are inferior and they are burden on us, or आपण white man's burden रो theory आपण जानिथिबे. Exactly सही जिंस एठी persist करूथला, continue करूथला, और as a result we have seen the resistance by the different peasants and tribal communities. Significance यदि आपण देखिबे, strong tribal resistance to colonial social cultural domination,
longest tribal uprising बोली कहा जाए एटा यार duration आपण एटी देखि परिबे 46 ରୁ 55 this was the duration almost 9 years and exposed the cultural insensitivity of British administration. Okay, these are the significance of this movement. Next is Kandhar rebellion, present day Kandhamal Ganjam surrounding tribal districts in Odisha inhabited by Kondh tribal community. Cultural I think this we discussed. Okay, discuss करथिला. Okay, Bhuvan rebellion देखो 1867 location Bhuvan Hills, present day Dhenkanal district रो Bhuvan Hills रे जो ट्राइबल माने थिले या पीजेंट्स ट्राइबल पीजेंट्स माने थिले खास करी सेमानकर स्टार्ट हितला ट्राइबल पीजेंट्स मेनली कोंद एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज. ओके, and these tribals have started becoming peasants in terms of what कारण से माने जो I mean shifting cultivation को जो ना primitive agricultural practices shifting cultivation यानी कि गोटे जो slash and burn cultivation पोडू चाष भी जोटा कहा जाए गोटे जगार forest area को से माने निया लगे कि पोड़ी दूतिले and then किसी दिन cultivate कले and then finally they shift to another place. Okay, तो सही टाइप रो तेनु tribal peasants माने से माने थिले भुवन rebellion हमको देखिबा को मिलथिला. Economic excessive land revenue demand, forced labor beggary system and economic exploitation by the local feudal lords and British officials. So excessive land revenue system जेमती आपण कहउतली रायतवारी system हो आपनकर permanent settlement system हो, it was implemented in different parts of Odisha. Second होची forced labor and this forced labor continued till आपण देखिबे हमरो जो प्रजामंडल मूवमेंट हमको देखिबा को मिलथिला. प्रजामंडल मूवमेंट रो मेन रीजन थिला आपनकर फोर्स लेबर. प्रजामंडल मूवमेंट रो मेन रीजन जोटा थिला आपनकर सेटा फोर्स लेबर ही थिला. कारण फोर्स लेबर पछरे रीजन कोन थिला आपण देखिबे जो आर्टिसंस माने काम करूथले एक तो इंडियन इकोनॉमी वाज सेल्फ सफिशिएंट. आर्टिसंस वर देयर जोटा कि हमर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज गुडी को काफी rich thila and they were self-sufficient. But Britisher came with this idea to destroy this handicraft industry and they replaced those machine-made products at the place of handicrafts. तो handicrafts industries और जेतोले destroy ही गला artisans माने ताले करिवे कोन जो कारीगर माने से तापर dependent थिले से माने करिवे कोन they started moving towards the rural India. Okay, तो rural India को जेतोले से माने गले I mean few among them were the farmer यानी कि जो मानकर किछि लैंड थिला they started cultivation but many such people or artisans were there, they did not have any land. So what they did they do से माने कोन कले bonded labor या बेगरी सिस्टम हिसाब रे यानी कि मजदूर हिसाब रे समाने काम करिबा स्टार्ट कले. सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स जो बेगरी सिस्टम आपनकर स्टार्ट हेची and it continued till independence एवं सेहिते पय आपण देखिबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे भी आपनकर ये प्रोविजन को मेंशन करा जाईची कि बेगर सिस्टम को आपण प्रैक्टिस करै परिबे नाही, स्लेवरी सिस्टम को प्रैक्टिस करै परिबे नाही बिकॉज़ दिस इज ए स्लेवरी सिस्टम. ओके, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बाय द लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल. सो दिस इज वन पार्ट लोकल फ्यूडल लॉर्ड और ब्रिटिश ऑफिशियल यानी कि जमींदारी सिस्टम जोटा हमें कहूचे जो पाएंगे हमें लैंड रिफॉर्म एक्ट रे भी अबोलिशन ऑफ जमींदारी और अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी को भी हमें प्रायोरिटीज देते. एडमिनिस्ट्रेटिव मिसरूल एंड करप्शन बाय द लोकल रूलर्स सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश. लोकल रूलर्स होची जो प्रोविंसेस या जो प्रिंसली स्टेट्स गुडी को थिला सेमानकर जो किंग माने थिले या राजा माने थिले बिकॉज़ प्रिंसली स्टेट रो राजा माननको ब्रिटिश had started giving patronage. सेमाने पैटर्नेज कहीं की दवा स्टार्ट कर ले बिकॉज ब्रिटिशर रियलाइज्ड कि if any such revolt or any such kind of movement would be there, these princely states ruler would be there to manage that, to suppress those revolt. हमें directly say suppression issue पर involve होगा नहीं. Our only job is to get revenue or more and more tax collection and let them these kings to suppress any such revolt. तेणु सेमान को गोटे बफर हिसाब रे काम कले को माने प्रिंसली रूलर्स माने एंड प्रिंसली रूलर्स मान को अल्टीमेटली ब्रिटिशर सपोर्ट भी थिला. सो दैट्स व्हाई लोकल रूलर्स मानकर भी एक्सप्लॉइटेशन काफी देखिबा को मिलथला. वायोलेशन ऑफ द ट्राइबल राइट्स, एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड
and suppression of the traditional practices. ये गोटे common factor थिला suppression of traditional practices as though मेरिया sacrifices हमें देखते and encroachment of the forest land भी हमें देखिचे. Political frustration with the growing British interference in the local governance जेमती मु आपन कहली सबु एरिया रो गोटे local self government अछि या local political structure अछि. If you destroy that, obviously there would be a kind of a resentment among them. Spontaneous grassroots movements highlighted the tribal discontent and anti-feudal sentiment. Okay, tribal discontent, or they wanted to fight against the jamidari system. This जो आपनकर landlord जो माने थिले जमींदार्स माने थिले समान का against it, and anti-feudal as well. Revealed the growing resistance among the marginalized communities to colonial and princely exploitation. Okay, princely exploitation in the sense कि जो आपनका princely states रो जो rulers माने थिले समान भी करूथिले. Actually जदि आपण देखिबा एटा double exploitation चले थिले. The colonial government British भी करूथिला एपटे rulers वाला भी करूथिले. Precursor to later agrarian tribal movements in Odisha. तो तापरे भी ये जो movement kind of inspiration for the upcoming agrarian and tribal movements in Odisha. Sim देखिबे तेलंगाना नहीं तेलंग खरिया revolt 1850s and 1860s रे देखिबा को मिलथला. Primarily छोटनागपुर प्लाट्यू प्रेजेंट डे झारखंड. ओके, जदि आपण ओडिशा पार्ट भी देखिबे छोटनागपुर प्लाट्यू जोटा आपनकर वर्तमान केउंझर एंड मयूरभंज से जो डिवीजन टी अछि सेही जगह रे आपण देख संबलपुर सुंदरगढ़ तनु पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न ओडिशा एज वेल सुंदरगढ़ एंड संबलपुर ए जगह रे भी मध्य रिवोल्ट हमको देखिबा को मिले छै. ओके, लीडर के थिला तेलंगा खरिया, ए charismatic tribal leader of Khariya tribe, revered as a social reformer, spiritual leader and freedom fighter. Telenga Khariya as a social reformer, spiritual leader and freedom fighter. If you see the reasons, first one is obviously economic, British and revenue policy, loss of traditional land rights, okay, exploitation by jamidar and money lenders. Money lenders were equally responsible because the farmers or peasants, tribals, they were taking loans from these money lenders and they did manipulation and to exploit more from the peasants and tribals. So saman ka against a movement idla. Imposition of foreign authority and tribal governance autonomy, social encroachment of tribal forest, ban on shifting cultivation, that is jhum cultivation. जोटा कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन पोडू चाष आम कौचे जोटा मुझे एबे भी डिस्कस करूली स्लाश एंड बर्न कल्टिवेशन या ऊपर से गोटे कंप्लीट बैन जेतु इम्पोज कले एंड दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज. कल्चरल अंडरमाइनिंग ट्रेडिशनल कस्टम लॉज फोर्स्ड एवेंजलिज्म बाय मिशनरीज. अच्छा, फोर्स्ड एवेंजलिज्म मिशनरीज कौन मुझे आपको जमी कहली 1813 ऑनवर्ड्स रे जो चार्टर एक्ट 1813 थिला. चार्टर एक्ट 1813 अलाउज द मिशनरीज to enter into the socio-religious arena of India, and this missionary activities were started. Although missionary activities tried to focusing on tribal people, deprived section by providing them all those facilities, someone education दवा start कले, समने जो social starter थिला या social जो divisions थिला society रे, and जो मने सबुटु दलित deprived section थिले, समान को जदियो जो डिस्क्रिमिनेशन होता से रेस्क्यू करवा स्टार्ट कले. बट जोटा कि सब ड्रॉबैक थिला मिशनरी एक्टिविटीज रो दैट वाज द कन्वर्जन, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ ल्यूरिंग द कन्वर्जिंग टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी दे वर ऑफरिंग दोज फैसिलिटीज. तो ये जिनस कोटी ना कोटी ट्राइबल पीपल वर डिसाइडेड कि आई मीन सिंपली से कौन कर जो इंडिजिनस रिलीजन एंड कल्चर अच्छी दे आर सिंपली losing. तो ये जो डॉरटी थिला that also led to what the fight against the British, okay, missionary activities by. तो से missionary activities through रही they started changing this tribal custom and laws, and the Maria sacrifice one example we have already discussed. Significance यदि अपन देखिए, a major example of organized tribal resistance with socio-political reform highlighted the deep conflict between the tribal self-rule and colonial centralization. Telanga Khariya is remembered as a precursor to tribal rights movements in eastern India. Okay, so these are the significance: organized tribal resistance, conflict between tribal self-rule and centralization rule of British, and precursor, that means inspiration to upcoming tribal rights movement.
Sambalpur uprising, another famous one, although we'll discuss only the tribe, peasant aspect. Sambalpur region, western Odisha. Bir Surendra Sai, descendant of ruling Chauhan dynasty of Sambalpur, a brave freedom fighter, strategist and symbol of resistance in Odisha. Reasons, let's see. Political, British refusal to recognize Surendra Sai's rightful claim because the king was minor and Surendra Sai was very close kin to the king. So, officially Surendra Sai should be given the responsibility to manage the Sambalpur, but he was denied. To the Sambalpur throne after the death of King Narayan Singh. So, King Narayan Singh ko pore tankara putra je thile, minor thile, choto thile. So, officially he was given the responsibility, but he was denied. Raning ko diya jaithila temporarily to look after the administration. Sambalpur was annexed by the British under the doctrine of lapse 1849 and discontent among tribal groups against British control and Jamindari operation, and especially it was again personal kind of personal loss or personal insulting for this Surendra Sai. Discontent among the tribal group, Gond, Vinjal, etc. against the British control, and colonial policy, if you see, harsh revenue demand, land alienation and curbs on the local autonomy. Okay. Doctrine of lapse discuss karithile ame ki biological son jadi no rahibo, obviously the territory will be annexed by the British government. If you see the significance, one of the most prolonged anti-British tribal uprising, जोटा कि सुरेंद्र साय का लीडरशिप रही जोटा संबलपुर अपराइजिंग हमें कहूचे. Surendra Sai is regarded as the pioneer of resistance in eastern India, showcased a strong tribal ruler alliance against colonialism. Okay, तो British against semane लड़ी थिले. So that's it with respect to peasant uprising. Okay, we have this Aarambh 3.0 batch is starting from 7th of June. Okay, pre, mains and interview batch. It is English and Hindi batch. Similarly, we have English and Odia batch, Paripurna, foundation batch, English and Odia. Okay, and you will get PDF in this Telegram channel. You can connect to me through my Insta or Facebook. If you have any query, any doubt, you can simply ask. Okay, thank you and see you soon in another video. Thank you.